नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एक बहुत ही जरूरी सर्कुलर के बारे में जो 2019 में आया था। देखिए, इस एक सर्कुलर ने ना एग्जाम से जुड़े कुछ बड़े नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल उठता है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आखिर नया क्या था। चलिए इसी को जरा डिटेल में समझते हैं। ये जो बदलाव थे ये 2019-2020 के एकेडमिक सेशन से ही लागू हो गए थे और हाँ, ये क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े चेंज की जिसने एग्जाम के बाद मिलने वाले सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक को कह सकते हैं काफी आसान बना दिया। देखिए, पहले क्या होता था, क्लास 10th के बाद स्टूडेंट्स को दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, एक मार्कशीट और एक अलग से पासिंग सर्टिफिकेट। लेकिन अब बोर्ड ने इस पूरे प्रोसेस को काफी सिंपल कर दिया है। अब मिलता है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, एक कंबाइंड मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। और ऐसा किया क्यों गया? ताकि आगे चलकर कॉलेज एडमिशन हो या फिर जॉब के लिए अप्लाई करना हो, इन डॉक्यूमेंट्स को संभालना और वेरीफाई करवाना आसान हो जाए। और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे हैं, ये जानकारी सीधे ऑफिशियल सर्कुलर से ली गई है। उसमें साफ साफ लिखा है कि 2019 के एग्जाम से सेकेंडरी लेवल यानी क्लास 10th के लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट को मिलाकर एक ही सिंगल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और एक बात और, ये रूल सिर्फ पास होने वालों के लिए नहीं है, बल्कि पास, कॉम्पिटेंट यानी कंपार्टमेंट और फेल तीनों तरह के रिजल्ट्स पर लागू होता है। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जो एग्जाम हॉल के अंदर शायद सबसे ज्यादा मैटर करता है, और वो है अनफेयर मीन्स, मतलब नकल या किसी भी तरह के गलत तरीकों के इस्तेमाल से जुड़े नए और अपडेटेड रूल्स। और यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिसे अनफेयर मीन्स माना जाता है ना, उसकी लिस्ट अब पहले से लंबी हो गई है। मतलब कहीं अनजाने में ही कोई नियम ना टूट जाए, इसलिए आगे जो बताया जा रहा है उसे गौर से समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कुछ रूल्स तो वही पुराने वाले हैं जो हम सब जानते हैं, जैसे एग्जाम में नोट्स ले जाना या किसी से मदद लेना देना। लेकिन जो चीज़ इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है वो हैं इसमें जोड़े गए नए नियम, जो खासकर आज के डिजिटल ज़माने को देखते हुए बनाए गए हैं। जैसे कि इम्पर्सनेशन, मतलब अपनी जगह किसी और को एग्जाम देने बिठा देना, या फिर सोशल मीडिया पर एग्जाम से जुड़ा कोई भी मटेरियल शेयर करना। यहाँ तक कि एडमिट कार्ड पर नकली फोटो लगाना भी इसमें शामिल है। और सुनिए, एग्जाम सेंटर में घुसने के बाद किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना अब सीधे सीधे अनफेयर मीन्स माना जाएगा। जाहिर है, इन रूल्स का मकसद डिजिटल चीटिंग और गलत जानकारी को फैलने से रोकना है। अच्छा, अब कुछ उन बदलावों की भी बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स को थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी और क्लैरिटी देते हैं, खासकर जब बात एकेडमिक चॉइसेस और स्पेशल नीड्स की हो। जैसे कि क्लास 10th या 12th में सब्जेक्ट चेंज करने को लेकर एक ज़रूरी अपडेट है। देखिए, पहले क्या था, इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अगस्त होती थी, लेकिन नए रूल के हिसाब से अब ये रिक्वेस्ट 15 जुलाई से पहले ही करनी होगी। इसका सीधा मतलब है कि अब फैसला लेने के लिए पहले से कम टाइम मिलेगा। एक और अच्छी बात यह है कि सीबीएसई ने बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए अपने सपोर्ट को और भी पक्का किया है। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है, उसके तहत एग्जाम के दौरान जो भी छूट और रियायतें मिलती थीं, उन्हें फॉर्मली बढ़ा दिया गया है। ये इसलिए किया गया है ताकि ये पक्का हो सके कि हर स्टूडेंट को जरूरी मदद मिल पाए। ओके, अब फटाफट कुछ ऐसे बदलाव देख लेते हैं जो स्कूलों के लिए हैं, मतलब जो बैकग्राउंड में होते हैं, पर इनका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि स्कूल स्टूडेंट्स का डेटा कैसे मैनेज करते हैं और एग्जाम कैसे कराते हैं। स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल्स में कोई गलती ना रह जाए, इसके लिए अब एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप, स्कूल फाइनल सबमिशन से पहले कैंडिडेट्स की लिस्ट पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। फिर करेक्शन के लिए जनवरी तक एक मौका मिलेगा। इसके बाद अगले एकेडमिक सेशन के नवंबर में एक और फाइनल चांस दिया जाएगा। और आखिर में एडमिट कार्ड, वो लास्ट मौका होगा जब पेरेंट्स और स्कूल किसी भी गलती को पकड़ सकते हैं। तो ये एक तरह से स्कूल और पेरेंट्स दोनों की मिलीजुली जिम्मेदारी बन जाती है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए इस पूरी बातचीत को जल्दी से समेट लेते हैं। मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली, क्लास 10th के लिए अब एक ही कंबाइंड मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरी, अनफेयर मीन्स के नियम पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं, खासकर सोशल मीडिया और डिजिटल डिवाइसेस को लेकर। तीसरी बात, सब्जेक्ट चेंज करने की डेडलाइन अब 15 जुलाई है, पहले नहीं। और चौथी, स्टूडेंट्स के पर्सनल डेटा में कोई गलती ना हो, इसके लिए अब कई लेवल पर चेकिंग होगी।
और आखिर में एक सवाल। सोचने वाली बात यह है कि ये जो नए नियम हैं, क्या ये सिर्फ एग्जाम्स को और ज़्यादा सख्त बनाने के लिए हैं, या फिर ये असल में हमारे एग्जाम सिस्टम को आज के ज़माने के हिसाब से ज़्यादा स्मार्ट और बेहतर बनाने की एक कोशिश है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। Heads up, everyone, because some big changes are on the way for the CBSE exams. The Central Board of Secondary Education has just updated its rules, and if you're a student, a parent, or a teacher, these are definitely updates you need to know about. So let's break down exactly what's new. Yeah, so whether you're a student gearing up for your boards, a parent trying to guide your kid through the process, or a teacher prepping your class, these changes are going to affect you. Let's get right into the details. All right, so here's what we're going to break down for you. We'll cover 5 key updates: a new single certificate, some much tighter deadlines for changing subjects, tougher anti-cheating rules, more chances to reappear for exams, and a whole new process for correcting your personal data. First up, let's talk about simplification. The CBSE is trying to streamline one of the most important parts of this whole process, the documents you get after your results are out. You know how it used to be, right? You'd get a mark sheet and a separate passing certificate. Well, say goodbye to that, because now they're just combining them into one single document. So kicking things off with the 2019 exams, students are now going to receive just one single consolidated document. This one piece of paper will be your mark statement and your official qualifying certificate, all rolled into one. So just to be super clear, we're going from the old system with 2 different papers to a new single certificate cum mark statement. And look, this might seem like a small change, but think about it. It's going to make a huge difference in cutting down paperwork and hassle, especially when you're applying for college or a job. Okay, next up, changing your subjects. Now, if you're in class 10 or 12 and you're even thinking about switching subjects, you really need to pay attention to this because there's a new, much earlier deadline. So the old deadline to request a subject change was August 31st. Well, that's been pushed way up to July 15th. I mean, that's a pretty big shift, right? It means you have to make that super important decision way earlier in the school year. And, oh yeah, there's a cost to this now. Any request is going to come with a processing fee of 1,000 rupees per subject. So planning ahead isn't just about meeting a deadline anymore, it's also about saving some cash. All right, now for a big one. Academic integrity. CBSE is really cracking down on cheating, and they've come out with a much stricter, much more detailed definition of what they call unfair means. Basically, the list of what's considered cheating just got a whole lot longer and more specific. They've expanded the definition to cover way more situations, so there's really no gray area left. And this isn't just about passing notes anymore. These rules have been seriously updated for the digital age. Okay, so let's start with what you can't even bring into the exam hall. The rules are now super explicit about banning prohibited items, and that list is pretty broad. We're talking not just phones and other communication devices, but even certain types of stationery, accessories, snacks, and even jewelry. The message here is crystal clear. Show up with only what you absolutely need. And the list of banned actions has gotten longer too. I mean, some of this is obvious, right? Like impersonation, paying someone to write your exam, or helping another student. But now the rules specifically call out things like tearing pages from your answer book or threatening exam officials as major offenses. And here's where things get really interesting, because the rules are finally catching up with technology. Uploading or sharing any exam material on social media is now officially considered cheating. Same thing goes for using a fake photo on your admit card or putting down the wrong information on your answer sheet. Okay, but it's not all just about stricter rules. There's actually some good news for students who might need a second shot at this. The board has also updated its policies on reappearing for exams. Now, it's really important to get the difference between the two paths here. If a candidate fails the whole exam, they can reappear the next year. But for compartment candidates, the ones who just need to clear 1 or 2 subjects, they're now going to get 3 chances to pass. That's a big deal. And a quick but very important note on the timing for this one. This new policy giving compartment students 3 chances, that doesn't start until the 2020 examination cycle. So keep that year in mind. All right, for our last section, we're going to talk about something that can cause some major headaches down the road: errors in your personal data. The good news is CBSE has created a new, really structured process to help everyone get it right from the very beginning. You can kind of think of this as a 3-step verification system. The board is basically putting the power back into the hands of students, parents, and schools to catch any mistakes early on.
The whole point is to avoid those huge problems with incorrect certificates later. So, let's walk through how this works. Your first chance is when the school hands out the registration cards or the list of candidates. That's check number 1. Then, you get a second opportunity later on, around November. And finally, the third and final check happens right when the admit cards are issued. At every single one of these stages, the responsibility is on the student, the parent, and the school to double-check everything. And there's a little bit of a financial incentive here to get it right early. If you need to make corrections after that final list of candidates has been submitted, there's going to be a fee of 1,000 rupees. So yeah, checking early can literally save you money. So, what's the big takeaway from all this? Well, the rules are changing. They're getting simpler in some areas, but a lot stricter in others. So, what's the most important thing you can do right now? Get in touch with your school. Seriously, go double-check that all your registration data is absolutely 100% perfect.